The brain is the most powerful thing you carry, and it can change at any time. And now, imagine if your brain could rewire itself, learn new tricks, and bounce back no matter what your age is. Sounds like science fiction? It is science, the neuroplasticity. Good evening, everyone. I am Aradhana, pursuing Bachelor's in Arts in Psychology from Uttaranchal University. And I'm grateful for this opportunity and I welcome you all. I want to take you all on a fascinating journey into the world of neuroplasticity, a concept that changed how we understand learning, recover therapy, and even the essence of who we are. So let's begin with the objectives. So these are my objectives. Introduction. What is neuroplasticity? Exploring different types of neuroplasticity, the Indian perspective, wisdom across faith, real cases, neuroplasticity in times of COVID-19, self-driven neuroplasticity, personal empowerment, examine the connection between neuroplasticity and mental health, understanding how neuroplasticity influences learning and memory, discussing the medical applications of neuroplasticity, how to rewire the brain, neuroplasticity in therapy and rehab, technology and neuroplasticity, neuroplasticity across the lifespan, busting myths, the future, plasticity in AI and education, conclude with a personal reflection. So, neuroplasticity. Neural means the brain and plasticity, the ability. Neuroplasticity is the brain ability to change, adapt and grow in response to experiences. सोचो ब्रेन एक मिट्टी की जैसे क्ले हो जो हर एक्सपीरियंस लर्निंग के साथ अपना शेप चेंज करता हो. आप लिटरली अपने ब्रेन का शेप चेंज कर रहे होते हो एंड आपके ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो रोज नए नए दोस्ती बनाते हैं और तोड़ते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस. एंड the father of neuroplasticity, Dr. Michael, had proved that adult brain भी खुद को repair और rewire कर सकता है. So now let's talk about the types. There are two types of plasticity, starting with structural. ये brain के physical change की बात करता है. जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारी neurons new connections बनाते हैं. It occurs throughout life, but not during the early development of brain. It follows a principle of neurons that fire together, wire together. Example, when you learn to play guitar or practice maths, new connections are being made in your brain. Visualize as if new rail tracks are being laid. Now let's talk about the functional. ये बताता है कि ब्रेन कैसे फंक्शंस को एडजस्ट करता है, स्पेशली जब कोई पार्ट डैमेज हो जाता है. इट्स द एबिलिटी टू शिफ्ट फंक्शन फ्रॉम डैमेज्ड एरिया टू अनडैमेज्ड वन आफ्टर इंजरी. इट अलाउ अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन टू कंपनसेट फॉर द लॉस्ट फंक्शन. अगर समवन कांट सी देन ब्रेन एडजस्ट करता है फंक्शंस. ब्रेन विजुअल कॉर्टेक्स का यूज हेयरिंग या फिर टच के लिए करता है. सो देयर इज दिस रियल केस बेस्ड एक लड़की जिसका हाफ ब्रेन सर्जरी से निकाला गया था, फिर भी उसने स्पीच और मूवमेंट डेवलप किया क्योंकि ब्रेन ने अपना काम नए एरियाज को दे दिया था. डॉक्टर बेन, अ न्यूरोसर्जन हु विटनेस्ड दिस सर्जरी, gave the statement that ब्रेन नए तरीके से अडेप्ट करता है. एंड both type of plasticity works together to enable learning, adaptation and recovery. Our Indian sirs already know all these. Says, Yad bhavam tad bhavati, which means as you think, you become. In Indian perspective, the mind and body aren't separated. They are interconnected. Practice like Ayurveda and yoga emphasizes this. Neuroplasticity validates it by showing how internal state reshapes the brain. Practice like dhyan, pranayam, and mantra chanting promote calmness and focus. Neuroscience now shows these practices reshape the brain in positive way, promoting compassion.
Just like we form habits, we can change them. Repeat positive actions, strengthen new circuits. These align with the Indian idea of reshaping sanskars through conscious living. Neuroplasticity allow us to evolve, not just mentally but spiritually. In in yogic traditions, rewiring the mind leads to liberalization from suffering and realization of true self. Today's science is catching up with what Indian traditions have practiced for centuries. Meditation improves memory and attention, while yoga enhances body and brain. India is not just the source of ancient wisdom, it is also actively contributing to modern research of neuroplasticity, especially in education, recovery, and psychological well being. Ancient Indian texts and modern science agree on power of inner transformation. Bhagavad Gita, Bible, Quran too speaks of mental renewal as a key to spiritual growth, meaning let a person uplift their own self, not degrade themselves. That means encourage self efforts and mental upliftment, resonating with how plasticity enables self direct change and healing. Bible, Romans 12:2 say, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, which means call for a change in mindset and spiritual renewal, matching neuroplasticity core idea of being reprogramming thoughts for transformation. In Quran, it says, indeed, Allah will not change the condition of the people until they change what is in themselves. That means change begin from within. This aligns with neuroplasticity principle that internal effort is key to mental and behavioral transformation. There are real case based on this neuroplasticity. The case one which tells that he suffered devastating brain injury. An axe attack left him with severe damage to his motor cortex, resulting in paralysis and loss of speech. He began to regain function by taking daily rehabilitation, including other therapies. He began to learn over time how to speak and start walking. Case 2, she lost the ability to perform new memories and recall much of her past despite significant memory loss. Johnson continued to create drawings and puzzles. Her ongoing endeavor suggested pathways to support her creativity. Her case provide valuable insight into how brain can reorganize itself to preserve certain functions even after sustainable damage. Case 3, at 53, uh, at 53, an individual decided to return to figure skating, a hobby she had not pursued since childhood. After 35 years, she re engaged with the sport, taking lessons and even performing. Relearning complex skating routines required her brain to perform new neural connections and to balance coordination and muscle memory. Engaging in this change physically, actively, not only regenerated her passion but also contributed to cognitive and emotional benefits, demonstrating the brain's capacity to adapt and grow at any age. These brain these cases underscored the remarkable adaptability of human brain. Another case, this is during the pandemic, which says that there is this woman who had suffered loss of feeling on her one side of the body, that is her left side, and she took and an operation had happened. After that, she recovered, and
For after the operation, she went for let's say 3 long months into a rehab, and after that, she recovered fully. Now, let's begin with the COVID-19 pandemic, an event that reshaped not just societies but our brain. During the lockdown, millions of people reported brain fog, increased anxiety, depression, and cognitive fatigue. The brain, constantly stimulated by a new normal, struggle to adapt at first. People were isolated and stressed, but then came the turning point. We saw an we saw people doing meditation, yoga, music learning, art therapy, and so on, and even journaling. These weren't just distraction, they were tools of neuroplasticity. In hospital, stroke and trauma patients started using online rehabilitation service. In India, research team at AIMS Delhi began examine how yoga-based intervention could aid rehabilitation, blending ancient practice with modern neuroscience. One real life case is of a woman who had stroke during the pandemic. She lost her ability to walk and speak. Though online therapy and singing exercise and art therapy, she regained almost full mobility and her speech. That's neuroplasticity live action. Let's switch the gear to something even more personal, self driven neuroplasticity. Neuroplasticity isn't just about recovering from trauma, it's about consciously shaping who you are. Every habit, every repeated thought, every emotions we hold on. It's all via our brain. Have you ever noticed how we get stuck in loops of self-doubt? That's neuroplasticity too. But here the twist is we can rewire that. The more you practice gratitude and mindfulness, the more those neural networks strengthen. When you tell yourself, I am capable, I'm healing, I'm learning. It may sound simple, but your brain is listening, forming new pathways. Mental health and brain plasticity are deeply connected. आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत कॉमन है, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी के पास इसका भी सॉल्यूशन है. As research says that negative pathways of brain can be replaced with meditation, therapy, and PTSD. PTSD is post-traumatic stress disorder, which is a mental health condition triggered by experiencing or witnessing a traumatic event. It can impact daily life and relationships. So, patients अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं मेडिटेशन से और अदर थेरेपी से. उससे ग्रे मैटर की डेंसिटी इंक्रीज होती है, जो बेटर इमोशनल रेगुलेशन में हेल्प करती है. Therapy that can be taken is CBT, that is cognitive behavioral therapy, जो आपके नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करती है और ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करती है. डिप्रेशन और एंजाइटी से ब्रेन के कुछ एरियाज श्रिंक हो जाते हैं, जो रिकवरी और हीलिंग के साथ दोबारा ग्रो कर सकते हैं. एंड डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन हैड प्रूव्ड दैट मेडिटेशन से ब्रेन के इमोशंस एरिया चेंज होते हैं और लोग ज्यादा काम बन जाते हैं. सो देयर इज दिस फन विजुअल दैट सेज नेगेटिव थॉट्स को सोचो जैसे वीड्स, और न्यूरोप्लास्टिसिटी उन्हें निकालकर फ्लावर ग्रो करने में हेल्प करता है. इफ यू आर अ स्टूडेंट, न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द राइट थिंग फॉर यू, क्योंकि जब आप कुछ नया सीखते हो, न्यूरॉन्स फायर टुगेदर, और जब आप बार बार फायर करते हो तो वो स्ट्रॉन्ग मेमोरी बन जाती है. So you can train your brain and can learn faster and effectively using some techniques. So let's start with the first technique. It says active recall, जिसमें आप सिर्फ नोट्स पढ़ने की जगह खुद से क्वेश्चन पूछ के आंसर दे सकते हो. सेकेंड इज स्पेड रिपीटेशंस, दैट सेज कि एक ही दिन में सब रटने की बजाय
आप रेगुलर इंटरवल में लर्न कर सकते हो. एंड थर्ड इज विजुअलाइजेशन. जो लर्न करना है उन्हें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी या इमेज के साथ जोड़ लो, फिर वो इजीली लर्न हो जाता है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर हम एक डांस का स्टेप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो एक टाइम के बाद वो हमें ऑटोमेटिकली आने लग जाता है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. एंड डॉक्टर एरिक, अ नोबेल प्राइज विनर, हैड प्रूव दैट लर्निंग से न्यूरॉन के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है. न्यूरोप्लास्टिसिटी सिर्फ लर्निंग या मेंटल हेल्थ तक ही लिमिटेड नहीं है. ये मेडिकल फील्ड में भी काम आती है. जैसे स्ट्रोक पेशेंट्स दोबारा चलना सीख जाते हैं बिकॉज अनडैमेज्ड ब्रेन पार्ट्स उन्हें ट्रेन कर रहा होता है. और ब्लाइंड इंडिविजुअल साउंड से देखना सीख जाते हैं इन द सेंस कि वो साउंड से गाइडेंस लेते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस that can we improve our neuroplasticity or not? So the answer is yes, we can. कुछ टेक्निक्स यूज करके हम ब्रेन को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं. एंड दैट टेक्निक्स आर टू लर्न न्यू स्किल्स लाइक लर्न प्लेइंग म्यूजिक, पेंटिंग करना या फिर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज. सेकेंड इज फिजिकल एक्सरसाइज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेली वर्कआउट से ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव और हेल्दी हो जाते हैं. थर्ड इज मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस. ये ब्रेन को रिलैक्स करता है और न्यू पाथवेज बनाने में हेल्प करता है. फोर्थ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हेल्दी डाइट. ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट्स मेक ब्रेन हेल्दी, बट अ बैलेंस डाइट इज ऑल्सो अ मस्ट. सो अब हम बात करेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी थेरेपी और रिहैब में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब कोई ब्रेन इंजरी हो जाती है या फिर स्ट्रोक या फिर कोई एक्सीडेंट के बाद कुछ एबिलिटीज लॉस हो जाती है तो ब्रेन की अडेप्टिविटी वहां काम आती है. थेरेपीज जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, आर्ट थेरेपी एंड सो ऑन, ये सब न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करता है. इन सिंपल वर्ड्स, ब्रेन को ट्रिक किया जाता है कि भाई तू नए तरीके से काम सीख ले. और इस सब में पेशेंट इज मस्ट, क्योंकि ब्रेन न्यू हैबिट्स डेवलप करता है और दिस टेक टाइम्स. Technology also play a crucial role. Today, VR, brain computer interface and neurofeedback tools यूज होते हैं जो ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं. एग्जाम्पल, स्ट्रोक पेशेंट को VR हेडसेट पे एक्सरसाइज करवाई जाती है जिसमें ब्रेन विजुअली और फिजिकली इंगेज होता है. बट दीज आर ओनली टूल्स एंड विदाउट ह्यूमन सपोर्ट ये लॉन्ग टर्म चेंज नहीं कर सकते. सो वी कांट फुली रिलाई ऑन द टूल्स. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, is brain plasticity only seen in young age? No, our brain can change at every age, but yes, the young brain is more adaptive. Just as it is easy for children to learn new language, but even in elderly people, if they try new things, take up new hobbies, their brain remain active. So, meaning neuroplasticity is possible, but in older age, a little more effort and consistency is required. And I want to say कि ब्रेन को रिटायर मत होने दो, उसको हर एज में इंगेज करते रहो. Learn something new every day. Now, let us bust some of the myths. First is brain is a fixed organ. So, no, brain is not a fixed organ. It is a dynamic organ and it can change at any time. Second, आप जितने स्मार्ट हो उतने ही रहोगे. So again, no, not at all. आप अपनी एबिलिटीज को बढ़ा और बदल दोनों सकते हो. अगर यूज नहीं करोगे तो कम हो जाएगी. थर्ड इस प्लास्टिसिटी सिर्फ रिकवरी के टाइम पे होती है. अगेन नो, हर दिन हम नए स्किल्स, हॉबीज सीख सकते हैं. इससे ब्रेन प्लास्टिसिटी एक्टिव रहेगी. अब फ्यूचर की बात करें तो एआई और न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉम्बो देखने को मिल सकता है. इट इज बीइंग यूज्ड to understand plasticity patterns of human brain to design
personalized learning models and therapy. एजुकेशन में भी पर्सनलाइज्ड लर्निंग और अडेप्टिविटी लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं. हर स्टूडेंट्स के ब्रेन के पैटर्न के हिसाब से वो एडजस्ट हो सकता है. सो फ्यूचर इज अबाउट ब्रेन एंड मशीन, दोनों मिलकर एक स्मार्टर जनरेशन क्रिएट करेंगे. सो अब हम फाइनली ये कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन एक मशीन नहीं है जो एक ही तरह काम करता रहे. ये एक डायनेमिक ऑर्गन है जो हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बदल सकता है. एंड दिस प्रूव दैट कोई भी हैबिट अडॉप्ट करना इम्पॉसिबल नहीं है, बस ब्रेन को ट्रेन करना आना चाहिए. सो लेट्स गो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. वी शुड यूज द पोटेंशियल ऑफ अ ब्रेन and develop the habit of learning new things. And brain is a plastic, और आप जब चाहो उसको नए तरीके से ट्रेन कर सकते हो. Whether it's overcoming a trauma during a global crisis or healing from everyday anxiety. We now know this truth. Our brain is not fixed. We are not fixed. We can grow, we can evolve, and that part quite literally is in our hand. And I like to end by saying a quote. You're not stuck with the brain you have. You can change it, and that changes everything. Thank you so much. Thank you so much, Aradhana. That was really a fantastic talk. So, sir के पास और उसका feedback लेने से पहले, there are certain questions that we would like to ask to you regarding your topic. So, the first question, here it goes. How does neuroplasticity differ in individuals with neurodegenerative diseases such as Alzheimer? You getting? Okay, so the question is actually question ये पूछ रहा है कि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है उसका इवोल्यूशन कैसे होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में और एक ऐसे पर्सन में जिसको कोई न्यूरो डिसीज है जैसे अल्जाइमर. तो इज देयर एनी चेंजेस बिटवीन द टू, लाइक अडेप्टेबिलिटी ऑफ जो ब्रेन है वो इंडिविजुअल में अलग होगा और उनमें अलग होगा, और आदेश और द पेस इज सेम और समथिंग एल्स? So neuroplasticity is significantly impaired but not completely absent in patients. So it is the capacity of neuroplasticity is reduced. In healthy brain, neuroplasticity supports learning, memory, and recovery. But in Alzheimer, the death of neurons, or like there is this disturbed neural circuit. So there is this difference. And फिर उसके बाद it affects brain region. Like neuroplastic changes are especially disturbed in area like the hippocampus. So these are the things. I got it. Like they are different. You mean to say that in a conclusion? Yes. They are quite different. Okay, the next question from Sambhav. Okay, we can skip the question. So the next question is from the is that कि जो शिक्षा है और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बेहतर बनाने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी की अंडरस्टैंडिंग को हम और कैसे ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, और वो न्यूरोप्लास्टिसिटी की अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन को इम्प्रूव करने में कहाँ काम आ सकती है, लाइक व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दैट एंड हाउ वी कैन डिजाइन आवर करिकुलम अकॉर्डिंग टू दैट. So you might have seen certain posts that कि China and Japan में there are schools जो बच्चों को ऐसे स्लीपिंग टाइम देते हैं और वहाँ पे अदर करिकुलर एक्टिविटीज होती है, लाइक उन्हें वहीं पे कुकिंग करना और बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है. वेयर इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम इट्स जस्ट कि बच्चा सिर्फ पढ़े और एक्टिविटी के नाम दे गिव जस्ट ऐसे पीटी एंड ऑल दैट थिंग. तो देयर इज दिस ह्यूज डिफरेंस. हम अपने एजुकेशन सिस्टम में नई नई चीजें ला सकते हैं. जैसे हम भी अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी लर्निंग एक्टिविटीज रख सकते हैं. जैसे देयर इज दिस आर्ट थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, ये सब तो कॉमन है, बट देयर आर अदर थिंग्स आल्सो. लाइक देयर आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 and 12 which I have witnessed this thing that वो ऐसे suicidal thoughts भी रखते हैं, but there is nothing in school. ऐसे से वो काउंसलर पे भी नहीं जाते हैं क्योंकि they think कि हमारी बातें जाके वो दूसरों को बता देंगे. सो दीज थिंग्स हैव टू बी चेंज, एंड जो नए नए पर्सपेक्टिव हम अदर कंट्रीज में देखते हैं वो हम इम्प्लीमेंट इंडिया में भी कर सकते हैं.
ओके, दैट वाज ग्रेट. वन मोर क्वेश्चन, लाइक फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो हैं, या फिर फ्यूचर लाइक प्रेजेंटली जो थेरेपीज और टेक्नोलॉजी जो हमारे पास हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की, या फिर ब्रेन इम्प्रूवमेंट की, आपको क्या लगता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा होने के बाद उनमें कुछ बदलाव आएगा, या फिर आएगा तो कैसा बदलाव आएगा? व्हाट इज द फ्यूचर अबाउट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी इन द सेंस? So as we know, like neuroplasticity is like very important and अभी recent trend में चल भी रहा है. So neuroplasticity, can you please repeat the question? Yeah, sure, why not? So the question is, लाइक फ्यूचर टेक्नोलॉजी में हम न्यूरोप्लास्टिसिटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, या फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में या कैसे मदद कर सकती है? हाउ कैन वी डू दैट? So ऐसे तो there are certain apps, right, जो अभी भी हैं ट्रेंड में, लाइक पीपल लर्न म्यूजिक, और फिर कुछ लोग बहुत पैशनेट होते हैं म्यूजिक के लिए. सो ये भी एक थेरेपी होती है. सो देर आर सर्टेन थेरेपीज जो हमें ऑनलाइन ऐप में भी मिल जाती है. सो अब हम जैसे एआई आ रहा है, सो देर आर पीपल जो अपना स्ट्रेस चैट जीपीटी से बात करके रिलीव करते हैं. सो व्हाई नॉट कि हम ऐसे थेरेपीज ले जाके, और अब तो साइकोलॉजी इज ऑल्सो इन ट्रेंड, तो बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, काउंसलर्स आ रहे हैं. तो व्हाई नॉट टू टॉक टू देम एंड ऑल दैट. तो वो जो थेरेपीज कराते हैं, फिर वो और ज्यादा बढ़ के आएगा, एंड पीपल विल गेट टू नो अबाउट दिस, हाउ टू रिलीव देयर एंजाइटी, स्ट्रेस, एंड ऑल दीज आर डन बाय न्यूरोप्लास्टिसिटी ओनली. या और आपने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान भी ये बात बोली थी कि जो न्यूरोप्लास्ट मतलब जो हमारा ब्रेन है, इट इज नॉट फिक्स्ड, इट कंटिन्यूज टू इवॉल्व. सो वहां पर भी कहीं ना कहीं चीजें, अगर हम न्यूरोप्लास्टिसिटी की इंपॉर्टेंस देखें, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, तो वहां भी चीजें इंप्रूव हो सकती हैं. इसी से जुड़ता हुआ एक क्वेश्चन ये भी है कि हम व्हाट वी डू, वी पुट वेरी एक्सेस प्रेशर ऑन अ चाइल्ड. लाइक जब चाइल्ड होता है हम उस पर बहुत एक्सेस प्रेशर देने की कोशिश करते हैं. वी ट्राई टू मोल्ड दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग विद द सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, continuously hogging on to that particular person. तो क्या उससे कुछ फर्क आता है हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में, हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में? सो जब हम सारा बर्डन स्टूडेंट्स पे डाल देते हैं, चिल्ड्रन पे डाल देते हैं, तो ऑब्वियसली एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत कॉमन है आजकल, और ये ब्रेन के कुछ एरियाज को श्रिंक कर देता है. सो जो चीजें हम जर्नली सीखना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे रुक जाती है, लर्निंग वगैरह. तो आफ्टर, अगर हम बहुत रिलैक्स है, रोज योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या चैंट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें उसको कहीं ना कहीं रिलीव करती हैं, हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं. बट हाँ, एक बर्डन से या इन सब चीजों से हमारे ब्रेन के एरिया श्रिंक हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. ओके, ओके. इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है. All right, I got it. Okay, so there are last two questions. The one is related to your subject only. Is that कि जो हमारे behaviors हैं, हमारी habits हैं, जो हम repeated way में करते हैं, they changing our brain structure over the period of time? यस, ऑफ कोर्स. जब हम कुछ भी नए सीखते हैं, नई एबिलिटीज अडेप्ट करते हैं, नई हॉबीज अडेप्ट करते हैं, या फिर हम जो अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, वो सब हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, All क्योंकि right, दे फॉर्म न्यू कनेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स. सो all right. So, okay, Aradhana, that was great. The one last question that we ask from our speakers is that how was your experience working with the Graduate Scholar Talk series? Do you want to say something? Want to suggest something? We are open for that. So you and Manvi and even sir helped me a lot, and you people asked me I need help and all that, and it was really wonderful experience when making this PPT, writing what I was. मतलब my perspective changed for neuroplasticity. मुझे इतना कुछ नहीं पता था, and you guys helped me a lot. And फिर उसके बाद when जब वो practice session चल रहा था, so you told me about the changes. After that I learned about इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी. मुझे नहीं पता था कि न्यूरोप्लास्टिसिटी और इंडियन पर्सपेक्टिव या एंशियंट टाइम का भी कोई कनेक्शन होता है. तो इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस. Okay, that's so good to hear it from you. Now I would like to hand over the mic to Ritesh sir. Sir, your comment and feedback over the topic, talk and the event, sir.
Hi, good evening to all of you, and especially Dr. Manish. It was wonderful experience. And one more thing, I want to congratulate you all the team members that continuing this 220th series is something which is a great achievement, great achievement. And using some concurrent issues, and today we saw the psychological issues. It's really wonderful. I congratulate the entire team. It was started when Manish was there in Shyam Lal College, I think. From there, the journey began, and now it is matured. And the talk which we are doing, it's really wonderful. As I am working in school, I saw such kind of problems, especially the psychological one. Uh, Many a times, the students are feeling stressed and stress due to their studies or from their surrounding, and sometimes the negative thoughts come in between in their mind, and to cope up for the teachers sometimes it's become very difficult. Okay, the issues are related, means the adolescence issues are also there, some stressful studies, the IITs, NEET, such kind of examinations creates lot of trouble in their mind. Okay, all of us are, all the students are not up to that mark, but somehow the due to the intense pressure of the guardian, they are trying to get it there, and forcefully guardian is putting them in such kind of competitive examination. So what I find that here, what Aradhana said is truly amazing, and I will show the video which I think Manish will upload at YouTube, and through the YouTube I can give them a glimpse that how could you cope up with such kind of situation. So GSTS, I think it was a great journey. It has already done, and hopefully it will continue in future as well. And one more suggestion is from my side, that if you people, if this GSTS team will allow, then I want to include my students of the class 11 and 12 to be the part of this journey, and they can also take some help from here. So it will only be done with the permission of Manish and his team members. And one good thing which I saw in my school that we are doing, that after the break, once the break is over, we do the meditation. Means the music is played, some very soft music is played, and students are, means after coming from the break, their mind is very different. So to calm down to them, we do the meditation for just for 4 to 5, 3 to 4 minutes. A meditation, a song is played, and from there, after the end of meditation, the classes begins. That is our regular routine practice, which we are doing. And somehow we appointed the counselors as well. The counselors is working with the students. So that kind of thing we are doing in our school, and hopefully that is a good step for the students as well. So today I think that it's a moment of great pride for me that Dr. Manish has doing something very good, very special, and his team members is getting all kind of cooperation from the team members, because without his team he couldn't succeed, which he planned very early, and because of his team members and his own effort, I think that becomes a great platform. So congratulations to all you guys, and hopefully I will be the part of your team in the next series as well. Thank you, Aradhana, for your insights. You are wonderful, and God bless, beta. Thank Thank you to all.